So, namaskar all of you. तो आज हमर ओडिशा सिविल सर्विस 2024 मेंस टेस्ट सीरीज रो फिफ्थ टेस्ट हमें तार क्वेश्चंस करिका देखिबा. सो आज रो टेस्ट रो हमर सिलेबस रहउची ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू ओडिशा, फिजिकल इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunamis, volcanic activity, cyclone, geographical features and their location, changes in critical geographical features including water bodies and ice caps, and in flora and fauna and effects of such changes. Odisha's natural resources, water, forests and minerals, Odisha's physiography and the riverine system. Hello. तो एटा हमर आज रो टेस्ट रो क्वेश्चंस करिका अछि. क्वेश्चंस रे डिस्कस करिया. बिफोर दैट जो आगुरु जो चारिटा टेस्ट हमर कंप्लीट हेछि, दैट आल्सो यू कैन गो थ्रू. एवरीडे हमें गोटे गोटे टेस्ट रो क्वेश्चंस डिस्कस करूछु. आउ आजि फर्स्ट टेस्ट रो हमर लाइव आंसर डिस्कशन अछि. ओके, सो किछिटा टेस्ट रो हमें लाइव आंसर डिस्कशन करिवा. बाकी सब डिस्कशन वीडियोस आपन को ऐप रे मिल जबो. ओके, सो लेट अस गो टू टुडेस क्वेश्चंस. So section 8 को आसंदु. Examine the major physiographic divisions of India. तो एटा फर्स्ट रहा. And analyze how these divisions influence the spatial distribution of population and economic activities. Okay, so physical division सेटा easy रहिला. Divisions, how they influence the spatial distribution of population and economic activities. तो एटा लिंक करिवाटा बेसी इंपोर्टेंट. एई जो स्किलटा अछि एटा आपन को शिक्षा पे पड़ियो, काइना आस्ते आस्ते अपन जो देखिबे 20 to 30% क्वेश्चंस अपन को मेंस रो सेथरे किछि टिके एनालिसिस पार्ट रहउची. 60-70% डायरेक्ट क्वेश्चंस ले भी 30-40% क्वेश्चंस रे ओके ओसीएस रे ए जिंसटा रहउची. Tropical cyclones, question 2. Tropical cyclones frequently affect the Bay of Bengal and Arabian Sea. Discuss the factors that make Bay of Bengal more vulnerable and outline steps needed to mitigate their impact in India. Question 3. India is rich in mineral resources, yet many mineral-rich regions lag in social and economic development. Analyze the reasons and suggest measures to overcome this paradox. जोटा हमें सब डिस्कस करूँ. ओके, poverty amidst plenty. Question 4 को आसंतो. With reference to India's river systems, compare and contrast Himalayan rivers and peninsular rivers in terms of origin, regime, sediment load and utilitarian potential. Okay, जो हम आगु भी कहि जे आपनकर ए टेस्ट सीरीज रे जो माने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अछन से माने डायरेक्ट आंसर लिख परिबे. जो माने प्रिपेयर्ड नाहंती माने विथ द टेस्ट सीरीज से माने प्रिपेयर करिवे, ताहले प्रथमे मॉडल आंसर थरे पढी देबे, तापरे लिखिबे. ओके, हमर जो मॉडल आंसर रहउची एगुडा प्राय वर्ड लिमिट को देखि की करा होची. आउ ईच मॉडल आंसर रे आपन को तारा गोटे प्रॉपर जोटा कि रेलेवेंट एग्जाम रेलेवेंट फिगर गोटे रहउची जोटा कि आपण परीक्षा रे कर परिबे. ओके, तो क्वेश्चन सहित आपण मॉडल आंसर भी ऐप रे जंति कि ए जो हम डिस्कस करूछु तारा मॉडल आंसर्स करिया ऑलरेडी अपलोड हे जायछि. ओके, सो एठी देखि कि भी आपण ताकू लिखि परिबे. ठीक अछि.
जो माने चाहूचंदी कि हमें टिके प्रिपरेशन प्रथमे करिकी तापर आंसर लिखे जो माने ऑलरेडी मीन्स देइचंती डायरेक्टली आपण आंसर लिखिबा स्टार्ट करि पारि ओके सो लेट अस कंटिन्यू विथ द क्वेश्चंस क्वेश्चन 4 with reference to India's river systems compare and contrast Himalayan rivers and peninsular rivers in terms of origin regime sediment load and utilitarian potential so ये चारटा origin of the rivers regime of the rivers sediment load और utilitarian potential केते utilize द कले कोनटा हे परिबो question 5 evaluate the current status of forest cover in India discuss the key drivers of forest loss and assess the implications for biodiversity climate change and human livelihood तापरे question 6 the physical geography of India is undergoing significant changes due to climate driven phenomena such as melting ice caps, retreating glaciers, changing rainfall patterns. Analyze the implication of these changes for India's water security and agriculture. Question 7. Describe the major physiographic features of Odisha and examine how they influence land use, agriculture and urbanization in the state. Question 8. Odisha is endowed with substantial mineral and forest resources. Critically examine how the exploitation of these resources has influenced the socio-economic development of the state. Question 9. Trace the riverine systems of Odisha, including its major rivers and tributaries. Analyze the challenges these river systems face, such as siltation, floods, pollution, and suggest remedial measures. Question 10. Odisha's coastal region is vulnerable to cyclones, storm surges, and erosion. Discuss the physical geography factors underlying the vulnerability and evaluate the adequacy of recent disaster management and resilience building measures in the state. चला एटा हला ग्रुप ए जो थरे आपण 250 वर्ड्स भीतर लिखिबे हो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है नाउ कम टू ग्रुप बी 300 words 20 marks important geophysical phenomena such as earthquakes tsunamis volcanic activity and cyclones are increasing in their intensity and impact in recent decades. Analyze this assertion with reference to global trends and India. Assess India's preparedness to deal with such events, pointing out gaps and suggesting improvements. Changes in critical geographical features, including water bodies, ice caps, flora and fauna, are indicators of environmental stress. With examples from India and abroad, examine the causes, consequences, and possible responses to such changes in context of sustainable development. Odisha's natural resources, waters, forests, and minerals present opportunities and challenges. Taking each in turn, evaluate how Odisha is managing these resources and the extent to which the management is sustainable and equitable. Question 14. The physiography and riverine systems of Odisha have shaped the state's human settlement, agriculture, and economy. Critically discuss the interplay between physiography, rivers, and natural hazards like floods and erosion in Odisha and propose a comprehensive plan for basin-wise integrated management. In the context of Odisha, assess how climate change, including sea level rise, increased cyclone intensity, altered monsoon patterns, may affect the physical geography, economy, and social fabric of the state over the next 2 decades. Recommend policy actions for adaptation and mitigation. एटा हला आपनकर फिफ्थ टेस्ट जोटा ऑलरेडी मॉडल आंसर्स अपलोडेड अछि तो सेतरे पॉइंट वाइज अछि और वर्ड लिमिट भीतर अछि ओके सो एवरीडे हमें गोटे गोटे टेस्ट देखुछु काहे कि ना एथरे बहुत माने ईच एंड एवरी पार्ट को जेंती कवर करा हिची ता बाहर प्राय किछि रहइबोनी बोले हमें कहि परिबा 55 टा टेस्ट एथरे रहउची ओके तो जस्ट भी अपन जदि ताकू सब क्वेश्चंस को थरे पढ़ी के मॉडल आंसर भी देखि देबे
ताहले भी आपनकर डबल की ट्रिपल थरो रिवीजन हे जिवो ओके सो 55 टेस्ट टोटल एथरे रहउची आउ प्राय सब टेस्ट गुड़ा एक्सेप्ट द फुल सिलेबस टेस्ट गुड़ा पर्टिकुलर डेट्स रे अछि जेमति कि हमें एबे टेस्ट 5 टा देखुछु ओके तो एवरा सब फ्लेक्सिबल डेट्स रे अछि टेस्ट 6 भी फ्लेक्सिबल डेट रे जोटा कि लास्ट टेस्ट ओके काली जोटा के देखिबा सेटा हला लास्ट टेस्ट आपनकर जीएस पेपर 1 रा ओके पॉलिटी जोथरे अछि तापरे टेस्ट नंबर 7 रो आपनकर पेपर 2 स्टार्ट हे जाउछि आउ टेस्ट 8 टा सेटा नवंबर 9 रे रहिबो सेटा हला फुल सिलेबस टेस्ट जोटा कि डेट स्पेसिफिक 55 टेस्ट भितरु अराउंड 15 टा टेस्ट अछि जोटा डेट स्पेसिफिक अछि ओके सेई डेट रे ही आपन टेस्ट टा रहिबो अदरवाइज बाकी उडा फ्लेक्सिबल टेस्ट रा फर्स्ट अपलोड हे जाउछि तो आपन सेई हिसाब रे निजो टाइम रे ताकू देई परिबे किंबा ताकू देखि भी परिबे लास्ट जोटा आपनकर डेट वाइज जदि हमें देखिबा 21 डिसेंबर रे लास्ट टेस्ट टा रहउछि जोटा कि पेपर 4 रो फुल सिलेबस टेस्ट टा रहउछि ओके सो दिस इज फॉर जीएस एमती ऑप्शनल्स करिका पई भी अछि ओके ए जो डिटेल शेड्यूल टा पीडीएफ टा आपण हमर टेलीग्राम चैनल रे पाइ जे परिबे ओके तो जो माने सेल्फ प्रिपरेशन करूचंती आपण यदि कोनोसी कारण में जॉइन भी कर परनांती टेस्ट करिका ताहले व्हाट यू कैन डू इज ए सब टेस्ट सब क्वेश्चंस रो आपण नीचे तकू आंसर्स भी बाहर करि परिबे ओके तो नीचे प्रिपेयर की रहबे ताले मोस्टली सबू आपनकर कवर हे जीवो क्वेश्चन जोटा एग्जाम रे आसी ओके तापरे ऑप्शनल भी 13 टा ऑप्शनल रो हमर टेस्ट सीरीज रहउची सेटा आरंभ होउची अपन 16 नवंबर रो ठीक अछि बट तारो कोना एंटायर टेस्ट सीरीज टा फ्लेक्सिबल डेट्स अपन को इच्छा रे अपन निजो रिजल्ट्स आसी गले जदी अपन एंती होउचन सेतोल दे परिबे ओनली 16 टा टेस्ट सेतरे रहउची कौन कौन ऑप्शनल्स अवेलेबल रहउची सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री होम साइंस एंथ्रोपोलॉजी फिलोसॉफी साइकोलॉजी एजुकेशन एवं लॉ ठीक अछि आउ जोटा हमर ओपन बैच टा रहउची आंसर राइटिंग पई एही तरह को जो माने मेंस देबे किंबा आगो पई भी जो माने प्रिपरेशन करूचंती तो तांको पई हमर 26 रु स्टार्ट होची आंसर राइटिंग बैच टा it actually workshop गोटे 6 days workshop which is completely free of cost okay free answer writing workshop एटा 26 रु नवंबर 1 अक्टोबर 26 रु नवंबर 1 रहउची जे कोन हमें बेसिकली कवर करूछु 6 days intensive course on answer writing covers all aspects of answer introduction टा केमति लिखिबे short introduction केमति लिखाबे दी लाइन रे लिखिबे किंतु maximum impact केमति हबो practice of analysis 2023 papers already paper 1 paper 2 हमें ऐप रे अपलोड कर सरलुनी सेटा फ्रीली जे भी तक एक्सेस कर परिबे तार किछि कोर्स भी रखाइबी आउ ऑनलाइन और क्लासरूम मोड रे ए जो वर्कशॉप टा अछि जो माने चाहउछनी क्लास रे लिखिबे आउ सेठी ही इवैल्यूएशन हे जिवो ताले आपण आसी के जॉइन कर परिबे कना एटा दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ओके गोटे जिंस खाली आपण प्रीलिम्स देथिबा दरकार रजिस्ट्रेशन बेले आपण को प्रीलिम्स रो एडमिट कार्ड टा दरकार हबो ओके क्लासरूम मोड पई आउ से क्लासेस जोडा हम YouTube लाइव रे भी दे देबो तेनो जो माने आसी पारनांती से माने भी कौन कुहायला वर्कशॉप रे दैट यू कैन गेट ओके आउ तारो वर्कशॉप रो भी जा कंटेंट अछि पीडीएफ करिके दैट आल्सो टेलीग्राम चैनल रे आपन को शेयर हे जिवो ओके सो दिस इज बेसिकली योर एंटायर जो हमर कोर्सेस अछि क्रैश कोर्स जोटा कि हमर मेन कोर्स ता सेतरे आपन को ई टेस्ट सीरीज ता भी इंक्लूडेड अछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिका तार डिस्कशन भी इंक्लूडेड अछि सेटा नवंबर 2 रु स्टार्ट होछि ओके नवंबर 2 रु सेटा स्टार्ट होछि आ दिस वन तो एथरे सातटा प्रिंटेड बही रहउछि जोथरे कि पूरा पिन पॉइंटेड आंसर्स अछि ओके जहां हमर सिलेबस अछि सब आंसर्स बहुत बडे आपन सेठी मिल जिवो आ ए बैच रे भी हमें सेही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रे ही पढाबो आपन को ओके तो एथरे ऑप्शनल छोड़ा बाकी सब कवर होछि GS paper 1 2 3 4 essay compulsory English compulsory Odia okay includes answer writing batch with model answers and discussion जोटा कि 6 टा रु 8 टा टाइमिंग एंती रहउची 4 टा रु 6 टा थ्योरी रहइबो
छटा रु 8टा तार आंसर राइटिंग रहइबो आपण जा पढिले तार आंसर्स करिका जोटा कि ऑलरेडी आपण को गोटे दिन आगुरु दिया ही जइथिबो ओके मॉडल आंसर करिया ताकू देखिକି लिख परिबे किबा आगु पढिथिबे तो ताकू प्रैक्टिस करिवे तमाने 4 आवर्स रु 2 आवर्स हला आपनकर आंसर राइटिंग और 2 आवर्स हला थ्योरी क्लासेस ठीक अछि आ 2006 रु 23 सब मॉडल आंसर्स ओके सेगुडा इंक्लूडेड एथरे रहउची ओके एटा ऑफलाइन में भी ऑनलाइन दीटारे अवेलेबल रहउची टाइमिंग 4टा रु 8टा रहउची ओके क्लासरूम कोर्स यार 10,000 रहउची इंक्लूडिंग द 7 प्रिंटेड बुक्स ऑनलाइन भी 7,000 रहउची इंक्लूडिंग द 7 प्रिंटेड बुक अब ऑनलाइन नेले भी आपन को थरे आसिया पड़िबो सेंटर को आसिकी आपनकर 7 डेज के 8 डेज पर एडमिशन रो सेट टा आपन नै परिबे जोते 7टा प्रिंटेड बॉय रहउची सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एबे आपण प्रिपरेशन जदि भी जहां भी आपण को स्कोर आसु एटा गोटे बड़ प्रॉब्लम ही जोची मु हबो कि हबनी तो एही टाइम टा नष्ट न करिकि आपण प्रिपरेशन करंतु भगवान न करंतु तो न भी होची तो नेक्स्ट ईयर पय तो आपण प्रिपेयर जा भी करिवे ओके तेनु सेति पय समयटा नष्ट न करिकि आपण भलरे प्रिपेयर करंतु बेस्ट विशेस नमस्कार